care of this cotton textile mills lobby. To cotton textile mills, mill owners lobby is much more stronger than our poor cotton growers lobby. There is no, as a matter of fact, there is no cotton growers lobby in the country. Actually, it was the cotton farmers which subsidized the textile industry. If you read the report of CSCP, Commission for Agricultural Cost and Prices, वो कहती है report कि we have paid cotton farmers deliberately 20% less to keep the textile industry afloat. चौधरी चरण सिंगांनी शेतकऱ्यांचं राजकीय प्रबोधन करताना म्हटलं होतं की किसान तू तेरी एक नजर हल पर रख और दूसरी नजर दिल्ली पर रख. तू इथे किती मेहनत केली काही कामाचं नाही, दिल्लीत एक निर्णय झाला तू मेला. Though once upon a time farmers wielded power and glory, यानंतर जर आपण देशाचा नकाशा पाहिला तर जागोजागी शेतकऱ्यांच्या आंदोलन दिसतात आणि विशेष करून त्या भागात शेतकऱ्यांची आंदोलन दिसतात जिथे हरित क्रांती झाली होती. पंजाब आहे, हरियाणा आहे, कर्नाटक आहे, गुजरात आहे आणि महाराष्ट्रात आहे. आणि 80 ते 90 जर आपण पाहिलं तर मला हे सांगायला काही संकोच नाही की 80 ते 90 हे शेतकरी आंदोलनाचं दशक आहे असं जर म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. शेतकरी आंदोलनं होती, शेतकऱ्यांमध्ये एक विश्वास होता की माझ्याकरता बोलणारा एक सशक्त ताकद आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नव्हत्या. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी 72 के लिए ईयर 72 की वीट क्रॉप के लिए उसकी MSP 5 रुपए कम करने का ऐलान कर दिया. तो अब अपने तौर पे स्पॉन्टेनियस रिस्पांस इतना था, विरोध हुआ, जगह जगह पे किसान सड़कों पे आ गए. पंजाब की जो मेन सेक्रेटरीट है वहाँ उसके फ्लैग पोस्ट तक चले गए. कोई लीडर नहीं था, लीडरलेस थे, कोई सब यूं ही निकले हुए थे. तो वहाँ यानी जैल सिंह थे चीफ मिनिस्टर, वो इतना घबरा गई एडमिनिस्ट्रेशन की. इतनी बड़ी संख्या में जुलूस चंडीगढ़ के एक तरफ से दूसरी तरफ अभी चल ही रहा है, तो कैसे बात करेंगे. हमने कहा भी नीचे आके हमारी बात सुनो. वो कहने लगे कि आपका कोई डेलीगेशन है उसे भेज दो. हमने कहा हमारा कोई डेलीगेशन नहीं. फिर भी कोई आपके लीडर होंगे. हमने कहा कोई लीडर नहीं. तो उसने कहा फिर कोई मेमोरेंडम है एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेज दिया, कैप्टन रतन सिंह को. वो हमें आके कहते हैं मुंडे हो कोई कुछ लिखा. हमने कहा नहीं हमने नहीं लिखा. उसने कागज़ दिए, इस पर कुछ लिख दो. हमने वहीं जैसे उसने गाइड किया, मेमोरेंडम कोई आता नहीं था कुछ लिखना. हमने थोड़े शब्दों में लिख के, ज्ञानी जी आए चीफ मिनिस्टर, हमने उनको दिया. वो घबराए हुए थे, अनरूली मॉब कहीं नुकसान ना हो जाए. तो इतना कह के चले गए कि मेरे पास कोई पावर नहीं, मैं तो ये सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दूंगा, आज ही चला जाएगा, तो मैं तो आपके साथ हूँ, ये कह के वो चले गए. तो फिर हम दिल्ली गए. बहुत बड़ा हजूम वहाँ भी इकट्ठा हो गया. वो भी अच्छे दिन थे, उस वक्त नहीं कोई रोका करता था. इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको पता चला, वो आ गए. today a peaceful rally is not allowed to hand over their petition to the elected representatives. Though political leaders are ever ready to use farmers' issues for their self-serving political agendas. Most of the farmers, being innocent, simply do not understand the clever machinations. मी नरेंद्र मोदींना पत्र टाकलं मागच्या वर्षी की दिल्ली सरकारनं 3000 रुपये भाव जाहीर केला. तुम्ही प्रभावी मुख्यमंत्री आहात, आम्ही 4500 रुपयाची मागणी करतोय. तुम्ही दिल्ली सरकारवर दबाव टाकून हमी भाव वाढवून घ्यावा. 4500 रुपयाचं मी लिहिलेलं प्रधानमंत्र्यांना पत्र तुम्हाला पाठवतोय. मला त्यांच्या सरकारचं उत्तर आलं, आभारी आहे त्यांचा की त्यांनी कमीत कमी उत्तर तरी दिलं. त्याच्यात लिहिलेलं आहे की गुजरात सरकारने दिल्ली सरकारकडे कापसाचा हमी भाव 3200 रुपये करावा असं आग्रह केलेला आहे. काँग्रेसचे 3000, भाजपच्या कापूस प्रदेशाचे 3200. काय फरक आहे हो? In any society, if peasants are committing suicide, then the state should prevent it. The fact that the state does not prevent it, okay, is something which is indicative of a certain disengagement of the state. Now, in the old days, the state was engaged with the peasantry, with agriculture and so on. Now the state is disengaged. Now it's not enough to say that this is a state subject, therefore it's the Punjab government and the Maharashtra government which are to be blamed. Of course they have to take some share of the blame. But on the other hand, their
their culpability lies in the fact that in the face of macro policies being pursued by the government of India, which are neoliberal, which are impinging on the peasantry, they are neither opposing these policies nor are they in fact providing some kind of a counter to these policies. I feel like giving a blow to anybody who talks of progress, because progress means rendering superfluous, obsolete, and redundant a section of our own population. You begin to rue the fact that they are still there as your neighbors. Tribals, landless laborers, farmers, artisans, and so on and so forth. So you wish that they were dead and a part of history. So then you can celebrate them. Say, we had fantastic artisans who built the Taj Mahal. We will build a museum to the glory of lost tribes whom we have destroyed. In Mahabharata, King Dhritarashtra was constantly in a dilemma between good and evil impulses. He would promise to act upon the good advice only to do the very opposite, only to repent again and pass the blame to destiny. This vacillating cycle continued till the end, resulting in the great war of Kurukshetra. म्हणून तुकाराम महाराजांनी म्हणलं आहे का आंधळे जे न खरे देवा गेले विसरून, तर म्हणून असं मनात वाटत आहे का हे सर्व जे आहे पाहत असूनही आंधळे आहे, म्हणजे समजत असूनही आंधळे आहे. The two stories have a lot of similarities. King Dhritarashtra's dilemma stemmed out of his love for his 100 sons. For Indian masters too is their love for their thousands of millionaire sons and their insatiable requirement for prosperity, growth and development. इन्होंने तो 12th प्लान में यहाँ तक कह दिया कि फार्मिंग छोटे छोटे फार्मर्स जो है दे आर नॉन वायबल, तो ये फार्मर जो है अपने आप ज़मीन बड़े फार्मर्स को या कॉरपोरेट्स को किसी को लीज आउट कर दे और लीज आउट करके उसी ज़मीन पे अपने मजदूरी का काम करे. मतलब इतना डिग्रेडेशन की बात कि एक फार्मर, आज तक मैं अपने को आई फील प्राउड कि मैं आई एम ए फार्मर और कल मैं मजदूर रहूँगा अपने ही खेत पे किसी दूसरे के लिए अपनी ही ज़मीन पे. तो यहाँ तक तो ऑलरेडी उन्होंने पॉलिसी डिसीजन ले चुका. We have a planning commission, but it is not planning for the agricultural laborers, for the marginal farmers and small farmers. It's not surprising that the august body of Planning Commission thinks rupees 32 in the cities and rupees 26 in the villages a just figure to meet expenses on food, health and education. 32 rupees per day per head to cover everything. It's simply not possible. The people who are making these calculations would happily pay 30 rupees just for one single cup of coffee. And yet they expect the poor to be able to cover their daily needs of food, of clothing, footwear, transport, healthcare, education, rent, electricity, or other fuels. These are absurd levels. So that is how they have artificially reduced the poverty proportion. It is not the view of the Planning Commission that the poverty line represents a reasonable level for the Aam Aadmi. So it is clearly a rock bottom level of existence, and we know very well that everybody at that level of existence is under significant stress. गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान, गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान, हर गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान, गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान. पूछा उससे नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था. Planning Commission and the government have been able to claim reduction is that they have not followed a proper procedure for measuring poverty. They themselves had a certain definition of who was poor, who was not, which they only applied once in 1973. That was a good, correct definition. They said that those who are able through their monthly spending, total monthly spending on all goods and services,
to access a minimum energy intake, 2,100 calories in urban areas, 2,400 calories in rural areas. Later the 2,400 was reduced to 2,200 calories. Those who are able to access this through the food spending part of their total spending are to be considered non-poor. Those who cannot access this minimum energy intake are to be considered poor. And the dividing line, the poverty line, is that particular total expenditure, whose food expenditure part gives you this energy intake. Simple, but they did not apply this definition, they only applied it once in 1973. Later on, all they did was take the original correct poverty line and they applied a price index. The problem is the price indices do not actually capture the actual rise in the cost of living. And the government which is doing this, the Planning Commission members who are doing that, they themselves would not accept it if their own salaries were adjusted according to price indices. Because that would mean they would be getting only 17,000 to 18,000 rupees per month today as a salary, whereas what they actually get is 4 to 5 times higher than that. In both these instances, there is an alternate gloating over transient gains and mourning over tragic losses. Today, when the tragedy becomes too critical for government to handle, loan waivers are announced, knowing fully well the futility of it all. WTO का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है क्योंकि उनको वेस्ट का एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना है, विच मीन्स बेसिकली प्रोटेक्टिंग द कॉर्पोरेट्स. सो जो उसका डिज़ाइन है एग्रीकल्चर का वो इस तरीके से है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर विच नाउ एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. One is the highly subsidized model of agriculture of the European countries or the OECD countries. The other is the highly subsistence agriculture of the developing countries, including India and China. जो वेस्टर्न सिस्टम है, अगर उसमें से सब्सिडीज़ को आप निकाल लेते हैं, जिसको हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ कहते हैं WTO के अंतर्गत, उनको अगर आप निकाल लेते हो तो अमेरिकन एग्रीकल्चर भी कोलैप्स करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी शोर मचाया है वो सिर्फ शोर मचाने के लिए मचाया. दे हैव नेवर बीन सीरियस इन फाइटिंग इट आउट, एंड दैट इज़ वाई वी आर नाउ बिकमिंग काइंड ऑफ ए फील्ड ग्राउंड. देखिए, इंडिया ने कभी चैलेंज नहीं किया उन सब्सिडीज़ को, अंडर डिस्प्यूट पैनल में जाके कभी चैलेंज नहीं किया. इसका मतलब साफ है. इंडिया का एग्जाम्पल ये रहता है कि साहब उनकी पोलिटिकल कंपल्शन है. इंडिया कहता है कि साहब उनकी पोलिटिकल कंपल्शन है, वो अपनी सब्सिडीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं. आपकी पोलिटिकल कंपल्शन क्या जरा बताइए. शुड वी ओपन अप, एंड दैट इज व्हाट आवर इकोनॉमिस्ट वुड सजेस्ट. प्लानिंग कमीशन सजेस्ट करता है कि आप ओपन अप करिए, यू शुड बिकम कॉम्पिटिटिव. व्हाई डजंट अमेरिका बिकम कॉम्पिटिटिव इज द क्वेश्चन नोबडी वांट्स टू आस्क. सो प्रॉब्लम यह है कि हमारे इकोनॉमिस्ट हैं देश के, दे आर मोर लॉयल देन द किंग. सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन दोज पॉलिसीज which actually try to open up developing countries or countries like India to give them the market strength. उनको अपने मार्केट सर्वाइवल के लिए चाहिए, ना कि हमारे देश में उसको कोई फायदा होगा. और उसका मतलब ये है कि जब बाहर से कंपनियां आएंगी तो हमारे देश के किसान जो हैं वो खेती से बाहर होंगे. There's nothing sacred about the green box. They have shifted most of their subsidies and redefined them to include them in the green box. So they can happily increase their subsidies every time global prices fall. And as you know, the level of subsidy per farmer is enormous in the United States. Is it really true that there can be no creation without a sacrifice? We consume, that is, sacrifice foodstuffs and thereby create vital energy necessary for life. Does it mean we have to sacrifice literally men and material in the fire of ambition in order to create the phantom of an empire? We have come to look at the farmers and our rural population as a liability. That we have gulped the 19th century European vision that all villages will ultimately be cities. I mean, do not look at the two world wars as only European wars. They were also a remnant, a mindset which was left behind by the cruelties during modernization, during the colonial times, and so on and so forth. This came out in the open in Europe. 1996 में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाय द ईयर 2015, which is not far away now, the number of or the percentage of population shifting from rural to the urban areas in India will be equal to twice the combined population of UK, France and Germany. Which means they had anticipated in 1996 कि अगले 20 साल में
40 crore log, 400 million people will be shifting from the rural to the urban areas in India. I thought that was a warning. But when I look at the subsequent World Bank reports, I realized it was actually to facilitate the process. They were telling us this, you must do this. And India is on the same pathway. So पूरी कोशिश आप देखें लैंड एक्विजिशन हो रही हैं, SCZ आ रहे हैं, और ये जो मॉडल है एग्री बिजनेस का, CII, FICCI, they are the now ones which are calling the shots. उनका जो फॉर्मल जो उनके डिज़ाइन है उसको गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन एक्सेप्ट किया है. तो वो मॉडल अब एग्रीकल्चर का लेके आया जा रहा है. सो दैट इज़ वेयर द फोकस मस्ट लाई इन द सेंस कि क्या वो रास्ता हमारे लिए ठीक है. क्योंकि इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर 600 मिलियन 60 करोड़ लोग जो खेती पे डिपेंडेंट हैं, उनको जब आप अर्बन एरियाज में मूव करोगे तो इट विल नॉट ओनली क्रिएट अर्बन chaos, it will not only create or force the collapse of the urban centers, but it will mean villages becoming empty. They want to reduce our farming community to a much smaller percentage of what it is. This is not only capitalism. Here there is complete consensus, even amongst the left. Tribals are fighting tribals, and the present Naxalite movement is an uprising, which is obviously everybody knows is entirely a tribal uprising. What would Gandhi say if he were to visit us now? Would he recognize the remnants of his India in the eternally condemned villages, frozen in apathy and suicides instead of being the soul of India? Ironically, in the same India, almost 100 years back in 1918, Gandhi had catapulted the farmers' distress in Champaran and Kheda into a satyagraha movement leading to India's independence. Making agriculture sustainable and lucrative is a required need even for our GDP-obsessed government. Planning Commission recommends a 4% growth in agriculture. We also feel very good that having gone through 2 exceptionally difficult years for the world economy, the Indian economy it's obviously been affected. I mean, after 4 years of 9% growth, we went down to 6.5 and then 7.4. Actually, the 7.4 was just released yesterday. The preliminary data for 2009-2010 was 7.2. But so now we go from 6.5 to 7.4. And we're hoping that in the current year, that is 2010-2011, we will be around 8.5. Rate of GDP growth does not really tell you about how that growth is distributed and in which sectors it is taking place. Now, if you look at the fairly high rate of growth we've been having, 7 to 8% per annum, before the world recession started and the slowdown started in the Indian economy, and you look at which sectors have been growing, you find that essentially it is just the services sector which has been growing fast. And the sectors which actually produce the all-important material output, agriculture and industry, have both been growing rather slowly, particularly the primary sector, agriculture and allied activities. By the 1990s, after economic reforms started, it halved, almost halved to about 1.7% per annum. The share of agriculture, similarly, which was 1/3 of GDP at the beginning of reforms, has declined drastically and is now hardly 1/6. It contributes hardly 1/6 of GDP. अगर ये कारण है कि एग्रीकल्चर का शेयर अगर जीडीपी में कम है तो एग्रीकल्चर को आप इग्नोर करिए, तो अमेरिका शुड हैव क्लोज्ड एग्रीकल्चर बाय नाउ. उनका 4% शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी पे, लेकिन अमेरिका फिर भी WTO में या G20 में या इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में एग्रीकल्चर को इतना क्यों प्रायोरिटी देता है? क्योंकि उनको मालूम है एग्रीकल्चर इज लिंक टू फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर इज लिंक टू लाइवलीहुड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर इज लिंक टू नेशनल सोवरेनिटी. तो ये जो एक धारणा क्रिएट की जा रही है कि एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में शेयर कम है इसलिए हमें भूल जाना चाहिए, ये बिल्कुल डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं देश के लिए. A country cannot actually progress unless the bulk of its people, the welfare of the bulk of its people improves. And the improvement of the welfare of the bulk of its people requires that there should be a radical policy shift away from all the time tom-tomming and the fact that there are so many millionaires and billionaires in India, or that Indian industrialists are going out
and acquiring foreign companies. That is relatively unimportant. That is going to happen anyway. It should focus rather on the mass of the population, the most deprived, let us say 70% of the population. At least some degree of acceptance must come of the farming community. At least some idea should be there that the way you snatch land at minimal compensation, the way you build cities by cheating the farmers of their land, that must stop. The natural growth of cities, if they are there, should be there. एक आणखीन शेतकऱ्यांना सांगितलं तुम्ही तुमचे एकरी उत्पादन वाढवा. तुम्ही एकरी उत्पादन वाढवत नाही म्हणून तुम्ही असेच राहणार. आणि आम्ही तुलना कोणाशी करतो? आम्ही अमेरिकेशी करतो, आम्ही चीनशी करतो, आम्ही युरोपशी करतो, आम्ही इस्रायलशी करतो. पण उत्पादनाची तुलना करताना ते शेतकरी एकरी किती एनर्जी इनपुट वापरतात याची तुलना नाही करतात. इस्रायलमध्ये 5 इंच पाऊस पडतो हे आम्ही सांगतो, पण इस्रायलमध्ये शेतीला सरकारचा सपोर्ट किती आहे, सबसिडी किती आहे, इकॉनॉमिक पॉलिसी काय आहे याच्याबद्दल आम्ही चर्चा नाही करत. आणि इथे डॉक्टर स्वामीनाथनचा उल्लेख ॲज अ फार्मर्स कमिशन चेअर म्हणून मी करू इच्छितो की स्वामीनाथननी फार्मर्स कमिशनचा चेअरमन म्हणून भारत सरकारला सांगितलं की शेतकऱ्याचं उत्पादन किती वाढलं यांनी शेतीचा विकास नका मोजू, तर शेतकऱ्याचं उत्पन्न किती वाढलं यांनी शेतकऱ्याचा विकास मोजला पाहिजे. जब पेप्सी यहाँ आया तो बड़ा शोर था कि ये किसानों को नई टेक्नोलॉजी देगा, नए सीड्स देगा, बहुत कुछ देगा, पेप्सी क्लियर होना चाहिए. तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे. हमसे अप्रोच किया गया पेप्सी की तरफ से कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, उन्होंने हमें समझाया कि ये बहुत अच्छी बात है, इसको सपोर्ट करो. हमने सपोर्ट कर दिया. जब वो क्लियर हो गया, अल्टीमेटली वो ही हुआ जो लोग विरोध करने वाले कहते थे. वो अपने सॉफ्ट ड्रिंक पे ज़्यादा उसने